Hello everyone. Today I am explaining some of the questions which I have written for the assignment. So these are some of the questions of the molecular pharmaceutics subject of the M.pharmaceutics semester 2. In this we will study the first question, that is the difference between targeted drug delivery system and conventional drug delivery system. कन्वेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डेफिनेशन इसमें क्या होता है, हाँ डिलीवर्स करता है ड्रग को नॉन स्पेसिफिकली थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इसमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता. बट जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टारगेट पे वो ड्रग को रिलीज़ करते हैं. इन द केस ऑफ द कन्वेशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिलीवर्स ड्रग नॉन specifically throughout the body, whereas in the case of the targeted drug delivery system delivers drug specifically to a target site, for example tumor, infected tissues. Specificity, non-specific affects both diseases and healthy tissues in the case of the conventional drug delivery system. In the case of the targeted drug delivery system, it is highly specific, designed to affect only the target cells or organs. Dosage requirement, in the case of the conventional drug delivery system, it is higher dose often required to achieve therapeutic effect at the site of action. Lower dose is sufficient due to direct delivery to the site of action in the case of the targeted drug delivery system. More common side effect due to the widespread distribution of the drug, whereas the fewer side effects due to localized delivery in the case of the targeted drug delivery system. Drug wastage in the case of the conventional drug delivery system, that is high drug loss and less efficient, whereas in the case of the targeted drug delivery system, reduced drug loss and it is more efficient. Delivery mechanism in the case of the conventional drug delivery system, typically oral or IV without targeting. In the case of the targeted drug delivery system, here we can use the ligands, nanoparticles or antibodies for site specific delivery. Therapeutic effect, in the case of the conventional drug delivery system, slower and less effective due to poor concentration at disease site, whereas in the case of the targeted drug delivery system, faster and more effective due to high concentration at target site. Examples, in the case of the conventional drug delivery system, oral tablets, injections. In the case of the targeted drug delivery system, liposomal doxorubicin antibody much conjugates. Liposomal doxorubicin antibody drug conjugates. Second question is, enlist the carrier system used in targeted drug delivery system. There are n number of the carriers which are used, but I have mentioned some of them. Liposomes, it is a spherical vesicle composed of one or more phospholipid bilayer. Example is the doxocyl. Neosomes, it is a नियोजम जो होता है वो सिमिलर होता है लिपोसोम्स के, और इसका ये जो होते हैं इसमें जो है नॉन आयनिक एफेक्टेंट से ये बना होता है. नैनो पार्टिकल्स, इसमें क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के, जो कि यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए. माइक्रोस्फीयर्स में क्या होता है, जो मैट्रिक्स सिस्टम होती है जिससे कि ड्रग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. माइक्रो कैप्सूल में क्या होता है, शेल फॉर्मेशन होती है, मीन्स क्या है, रिजर्वायर सिस्टम वेयर ए ड्रग इज इनक्लोज्ड विद इन ए शेल. डेंड्रीमस, इट इज़ हाईली ब्रांच्ड tree like synthetic polymers. Missiles, self-assembled spherical structures formed by amphiphilic molecules in water. In this another carriers, like we can say cyclorexin, monoclonal antibodies, products, virus-based carriers, hydrogel, etc. In this, the formulation components of the liposome, we will study about that. We know that the liposomes are the spherical vesicles which consist of a one or more phospholipid bilayers which are surrounded by an aqueous core position of the liposome. There are number of in this the composition of liposome. There are number of components of liposome. However, phospholipids and cholesterol are the main components. Phospholipid, it is a major component of biological membrane. It is
एम्फीपैथिक मोइटी। सो इसमें जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है। जब भी इसे हम प्लेस करते हैं एक्वेस सॉल्यूशन में, क्या होता है, फॉस्फोलिपिड जो है सेल्फ मतलब खुद सेल्फ असेंबल हो जाता है बाइलेयर स्ट्रक्चर में, और इसका जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो फेस करता है वाटर की तरफ, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं। Phosphatidylcholine is one of the most common phospholipid. There are the two types of the phospholipid along with their hydrolysis products. In these two types of the phospholipid, that is the phosphoglycerides and the another one is the sphingolipids. Commonly used phospholipids in this the natural phospholipid and the another one is the synthetic phospholipid. In the case of the natural phospholipid, it includes phosphatidylcholine, phosphatidyl in ethanolamine, phosphatidylserine. In the case of the synthetic phospholipid, diolulyl phosphatidylcholine and diasteroyl phosphatidylcholine and diolulyl phosphatidylethanolamine. This is the basic structure which I have mentioned here. This is a phospholipid structure and the hydrophilic head is there, and these are the tail which is hydrophobic in nature. Next is the cholesterol. Incorporation of sterols in liposome bilayer can bring about major changes in the preparation of these membranes. Cholesterol does not itself form bilayer structure, act as fluidity buffer. It is also amphipathic molecule. It inserts into membrane with hydroxyl group oriented towards aqueous surface and allipathic chain aligned parallel to acyl chain in the center of bilayer. It can be incorporated into phospholipid membranes in a very high concentration up to 1:1 or even 2:1 molar ratios of phosphatidylcholine. Cholesterol incorporation increases the separation between the choline head groups and eliminate the normal electrostatic and hydrogen bonding interaction. Role: it generally decreases the membrane permeability, increase rigidity and mechanical strength. Other components, like we can say drug or we can say API, their function is to therapeutic agent is encapsulated in the liposomes. Hydrophilic drugs, these are encapsulated in the aqueous core. Lipophilic drugs incorporated within the lipid bilayer. Surface modifiers or the targeting ligands, these are optional. Their main function is to modify the surface characteristics for stability or targeting. Example is the polyethylene glycol, prevent opsonization and increases the circulation time. Buffers or aqueous phase, it maintains the pH and osmotic balance during liposomes formation. Example is phosphate buffer, citrate buffer. It is its importance. It ensures drug stability and efficient loading. pH sensitive liposomes may release drug at acidic pH. Cryoprotectants or stabilizer, it is generally used for the storage purpose. It protects the liposome during freeze drying or we can say lyophilization. Example in this is the sucrose, mannitol. It prevent the aggregation and preserve liposome structure. Here are the few of the reasons for developing the targeted drug delivery system. In this, the first one is the pharmaceutical. It include the that drug जो होता है, एक तो वो अनस्टेबल होगा और सॉलिबिलिटी रिलेटेड उसके प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो पुअरली सॉलिबल होगा तो उसकी जो सॉलिबिलिटी है बढ़ाने के लिए हम लोग टारगेटेड सॉलिबिलिटी इन्हांस, जो भी पुअरली सॉलिबल ड्रग होते हैं उनको हम लोग क्या है इस रूट से देंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम से. और बायोफार्मास्यूटिकल में क्या लो एब्जॉर्प्शन, हाई मेम्ब्रेन बाइंडिंग और बायोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक. शॉर्ट हाफ लाइफ, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लो स्पेसिफिसिटी. क्लिनिकल, लो थेरेपेटिक इंडेक्स, एनाटॉमिकल और सेलुलर बैरियर्स. कमर्शियल, ड्रग प्रेजेंटेशन. इन दिस अदर रीजन्स लाइक वी कैन से ये जो है इम्प्रूव करता है बायो अवेलेबिलिटी को. ये इंश्योर करता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है ड्रग का वो टारगेटेड साइड पे जो है रीच होना चाहिए, जिससे कि हमें जिससे कि जो थेरेपेटिक एफिकेसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी या थेरेपेटिक एक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ होती है. टू मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट्स, reduce the systemic exposure, thereby lowering
adverse effects, especially in chemotherapy and potent drugs, to reduce drug doses and frequency. इसमें क्या होता है, एक तो प्रिसाइज टारगेटिंग होती है और स्मॉल डोज यूज़ किया जाता है, इसलिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है, इसलिए ये रिड्यूस कर देता है डोजिंग फ्रीक्वेंसी को. टू डिलीवर पोअरली सॉल्युबल और अनस्टेबल ड्रग. इसमें क्या होता है, ये जो इन्हांस करेगा सॉल्युबिलिटी को और स्टेबिलिटी को, जैसे ये स्पेशलाइज कैरियर यूज़ करता है. वी नो दैट लिगेंड्स होते हैं, लिपोसोम्स हो गए, nanoparticles, to cross the biological barriers. It helps in delivering drugs across difficult barriers like blood-brain barrier or tumor environment. To enable controlled or sustained release, maintains drug concentration within the therapeutic window for a prolonged period. To improve patient compliance, it lowers the side effects, reduce doses, and less frequent administration, make therapy more acceptable. To achieve site-specific action, ensures localized drug action at the target organ, tissues, or cells, tumor, brain, or liver. To overcome limitations of the conventional drug delivery system, we are using the targeted drug delivery system. Here are the few of the examples of advantages of the targeted drug delivery system. In this, it enhances the therapeutic efficacy, high drug concentration at the site of action. It will increase the effectiveness. Second, reduce side effect, minimal exposure to healthy tissues, reduce toxicity, lower drug doses required, effective even at low dose, saving the cost and reducing risk. Controlled and sustained release, ये जो ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग लास्टिंग थेरापेटिक इफेक्ट, उसकी वजह से क्या है, ये जो है स्टेबल रहता है. इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, अगर लेस फ्रीक्वेंसी होगी डोजिंग की और उसका साइड इफेक्ट कम होगा तो ये इम्प्रूव करेगा एडेरेंस को. ओवरकम करेगा ड्रग रेजिस्टेंस. इट विल बाईपासिस द मैकेनिज्म लाइक ग्लाइकोप्रोटीन पम्प्स इन द कैंसर सेल्स, प्रोटेक्ट सेंसिटिव ड्रग्स, protect unstable or degradable drugs, example peptide, from enzymatic degradation, suitable for targeting specific cells or organs, especially useful in cancer, brain disorders, etc. These are the, we will study events or we can say biological processes in the drug targeting. First we will see the definition of the targeted drug delivery system. Targeted drug delivery system is a special form of drug delivery system where the pharmacological activity, agent, or medicament is selectively or delivered only to its site of action or absorption and not to the non-target organs or tissue or the cell. इसमें क्या होता है, जो फार्माकोलॉजी एक्टिव एजेंट या फिर मेडिकामेंट जो भी होता है वो टारगेटेड डिलीवरी साइट होती है ना, वहीं पे वो एडमिनिस्टर कर मतलब डिलीवर किया जाता है ड्रग को. नॉन टारगेटेड ऑर्गन या टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे वो डिलीवर नहीं करते. जैसे हम कैंसर के केस में कैंसर के सेल्स पे ही वो टारगेट करेगा, लाइक दैट पर्टिकुलर ड्रग टारगेट करेगा. ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू अचीव ए डिज़ायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एट ए सिलेक्टेड साइट्स without undesirable interaction at other sites, thereby the drug have specific action with minimum side effects and better therapeutic index. Example, in cancer therapy, in cancer chemotherapy, and in enzyme replacement therapy. Yeah, as already I have stated above during the definition that it is used for a specific target, like in the case of the cancer chemotherapy it is used. Ideal characteristics in this, the first one is biochemically inert होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इम्यूनोजेनिक, फिजिकली और केमिकली ये स्टेबल होना चाहिए. देन इट शुड हैव द यूनिफॉर्म कैपिलरी डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोलेबल एंड प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ ड्रग रिलीज, ड्रग रिलीज जो है इफेक्ट नहीं करना चाहिए ड्रग एक्शन को. थेरेपेटिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज, मिनिमल ड्रग लीकेज ड्यूरिंग ट्रांजिट. कैरियर्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, जिससे कि वो बॉडी से इजीली रिमूव या फिर रेडीली एलिमिनेट हो सके विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम्स, लाइक कोई डिजीज़ को वो इंड्यूस ना कर सकें. प्रिपरेशन ऑफ द डिलीवरी सिस्टम जो है वो इजी होती है और सिंपल, रिप्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए. दीज आर सम ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड events which are involved in drug targeting. First in this is cellular target uptake and processing, transport across the epithelial barrier, extravasation, lymphatic uptake,
cellular uptake and processing. Following administration, low molar mass drugs can enter into or pass through various cells by simple diffusion process, but the macromolecules that are unable to enter into cells by simple diffusion process, instead they are captured by a process called endocytosis. Endocytosis is defined as a phenomena that involves internalization of the plasma membrane and with the concomitant engulfment of the extracellular material that can be a fluid or particulate. Endocytosis is divided into the two types, pinocytosis, phagocytosis. Phagocytosis is also known as cell eating. It is a process by which a cell uses its plasma membrane to engulf a large particle, giving rise to an internal compound called the phagosome. A cell that performs phagocytosis is called phagocyte. It is mediated by the absorption of specific blood compartment. Example is immunoglobulin, complement C3b and fibronectin. It is called opsonins. Particles with high hydrophilic surface characteristics tend to go opsonization to a lesser extent and a result exhibit decreased phagocytic uptake. Following ingestion, the phagocytic vacuole or phagosome fuse with one or more lysosome to form phagolysosome, secondary lysosome. It is here that the digestion of particles by lysosomal acid hydrolysis, example proteinase, glycosidase, nuclease, etc., occurs, making the drug to exert its therapeutic effect. Pinocytosis, it is also said to be as cell drinking. It represents engulfment of fluid and appears to be universal phenomena in all cells, including phagocytes. It is divided into the two types. One is the fluid-based pinocytosis and the another one is the adsorptive pinocytosis. In the case of the fluid-based pinocytosis, it is non-specific continuous process and it is believed to be useful as a general process for transporting macromolecules construct through epithelia into various blood cells. Adsorptive pinocytosis, it refers to internalization of macromolecules that bind to cell surface membrane. This is a diagram how the here we have seen that it is a phagocytosis and it is a pinocytosis. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द इपिथेलियल बैरियर, इसमें क्या होता है बक्कल म्यूकोसल ओरल बक्कल नेजल वेजाइनल और रेक्टल कैविटीज़ जो होते हैं वो क्या इंटरनली लाइंड होते हैं एक तो एक या फिर एक से ज़्यादा इपिथेलियल लेयर के सेल से। उनकी जो पोजीशन और फंक्शन के ऊपर डिपेंड करने से क्या डिपेंडिंग ऑन दैट जो बॉडी में इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द सिंपल टू द क्यूबॉइडल टू द स्क्वैमस टाइप्स। 3 लेयर्स होते हैं जिनकी फिजियोलॉजी इसमें पहला जो एपिथेलियल है लेमिना प्रोपायरा, बेसल लेमिना इसमें देखते हैं। लोअर मास जो होता है लोअर मोलर मास ड्रग्स कैन क्रॉस दी अबव बाय पैसिव डिफ्यूजन से, एक तो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसफर सिस्टम या सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव एंडोसाइटोसिस। पोलर मटेरियल जो है इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं टाइट जंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल, जिसे हम पैरासेलुलर रूट भी कहते हैं। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं वो शो करते हैं इंक्रीज अपटेक एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है ड्रग्स का बक्कल से फ्रॉम द बक्कल रूट, इट इज़ थ्रू दी ट्रांससेलुलर एंड पैरासेलुलर लेटर बीइंग डोमिनेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ये यूजुअली हायर इन डैमेज म्यूकोसा, वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द एपिथेलियल सेल। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस इंटेस्टाइनल epithelium may occur by cellular vesicular processes involving either fluid phase pinocytosis or specialized receptor mediated endocytic processes. Example in this is the vaginal cavity could be an effective delivery site for certain pharmaceuticals such as calcitonin, which is used for the treatment of postmenopausal osteoporosis.
It is widely accepted that the molecules with a molecular weight of less than 10,000 can be absorbed by the nasal epithelium into systemic circulation, but large molecules such as proteins require both penetration enhancer and bioadhesive. A variety of penetration enhancers have been used to improve intestinal absorption of macromolecules. Example is salicylate EDTA, enamines, etc. Extravasation. Many diseases result from the dysfunction of cells located outside the cardiovascular system. Thus, for a drug to exert its therapeutic effect, it must depart from the central circulation and interact with extracellular, extracellular, or extravascular intracellular targets. This process of transvascular exchange is called extravasation. It is governed by the permeability of blood capillaries wall, factor that control permeability of capillaries, structure of capillary wall, pathophysiological structure, rate of blood and lymph supply, physicochemical factors of drug. Structure of blood capillaries varies in different organs and tissue. It is single layer of endothelial cells joined together by intercellular junction. Depending upon the morphology and continuity of the endothelial cell layer and the basement membrane, blood capillaries are divided into the three. First in this is the continuous fenestrated sinusoidal continuous capillaries. These are common and widely distributed in the body. It exhibit tight endothelial junction and an uninterrupted basement membrane. Fenestrated capillaries, it shows interendothelial gaps of 20 to 80 nanometer. Sinusoidal capillary shows interendothelial gaps of 150 nanometer. Depending on the tissues or organs, the basal membrane is either absent in liver or present in discontinuous, like we can say spleen or and bone marrow. Macromolecules can transverse the normal endothelium by passive process such as non-specific fluid-phase transcapillary venocytosis and passage through interendothelial junction gaps or fenestrate, or by receptor-mediated transport system. Organs such as lungs with a large surface area have proportionality proportionality uh, surface area have a proportionately large total permeability and consequently ये high extravasation. मतलब इसमें क्या होता है, ऑर्गन जो होता है उसमें लीवर एक ऐसा, लीवर के अंदर क्या होता है, एक तो लार्ज सरफेस एरिया होता है, तो उनकी जो परमेबिलिटी जो होती है वो भी हाई होती है और उसमें क्या होता है, हाई एक्सट्रावेसेशन टेक प्लेस होता है. देन इसमें क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द चार्ज, साइज, शेप, देन HLB दैट इज़ द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. एंडोथीलियम जो होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट of all endothelial, which is formed by the continuous non-fenestrated endothelial cells, which shows no pinocytic activity. Soluble macromolecules permeate the endothelial barrier more readily than particulate macromolecules. The rate of movement of fluid across the endothelial appears to be directly related to the difference between the hydrostatic and osmotic forces. ये जो लाइन है नीचे वाली, वो क्या है, बेसमेंट मेंबर है. फर्स्ट वाला जो है कंटिन्यूस है, इसमें क्या होता है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है. वेयर एज इन द केस ऑफ द फेनेस्टर ये और ये जो है साइनोसॉइडल, इसमें क्या होता है, कफर सेल प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है, गैप होता है, साइनोसॉइडल गैप्स. नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फेटिक अपटेक. Following extravasation, drug molecules can reabsorb into the bloodstream directly or enter the lymphatic system and return with the lymph to the blood circulation. Also, drugs are administered by subcutaneous, intracellular, transdermal, peritoneal routes, can reach the systemic circulation by lymphatic system. This is in the
This is here is the loop of capillary, then there is the blood flow extravasation, and the pathway which is followed by the macromolecules, and pathway followed by the water and small solutes, and here it is the lymphatic vessel. यहाँ से movement हो रहा है fluid का, lymphatic fluid का. Factors known to influence the clearance of drugs from interstitial साइट्स, इसमें क्या होता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, साइट एंड सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल फॉर्मुलेशन मीडियम, the composition and the pH of interstitial fluid, and diseases within the interstitium. The direct delivery of drugs into the lymphatics has been proposed as a potential approach to kill malignant lymphoid cells which are located in the lymph nodes. This is all about the assignment questions. Thank you.